Okay. So in today's discussion, we'll talk about some random questions, which have been asked from real numbers in the past few years. Okay. So that we could be prepared for the upcoming weekly test of real numbers that is on Monday. To do cover up all these varieties, we discussed it day before yesterday also. तो उसी को extend करते हुए कुछ और range of questions को इसमें add करते हैं and let's try to work it out. है ना? चलिए then. Okay. Let's start with some range. Find HCF and LCM of 12, 15, 21 by prime factorization method. Okay. One of the generalized questions asked in CBSE 2020. Asked in the year 2020. Okay. Anything that has been asked in the previous years is of keen importance to us also. The variety could be repeated, numbers could be changed. So we'll be taking up all the aspects. Very easy questions, easy, average, above average, and the odds category. So let's execute this first. Prime factorization of 12, 15, and 21. Okay. 12, 15, 21. Done. So in order to find the HCF, we will take the common part. That comes out to be 3 for now. And LCM would be 420, है ना? तो जो common number हमने HCF में लिया है, that will be included, and rest all remaining individuals will be included under the LCM. And yes, the product comes out to be 420. ठीक है. These kind of questions are in 2 markers, है ना? So it's just a 2 mark range. Let's see. Okay, moving toward the next one. That's the first range that has been already asked. Let's see what else we have. Next. This question is a part of NCRT. We are just including it here in the question bank just to mark its importance in the previous years. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0. We have already covered up this in the regular class sessions. Okay. Just wanted to highlight this particular thing that it has been asked in 2012, 2011,
2010. And yes, it is a part of NCERT too. Okay. ठीक है. Are we aware with the matter? है ना? We have to present the backup of fundamental theorem of arithmetic. Okay. Along with it, I just need to describe the factors of 6 includes only 2 and 3. What is missing? 5. 5. है ना? For a number to end with the digit 0, we compulsorily need 5 as a factor, which is not available right now. We need to have a 5 as factor for a number to end with digit 0. So that in our case is not available right now. Okay. So that particular number can never end with the digit 0. So this particular one is also keen importance. It will also be asked in a range of 2 marks. Just a 2 mark. Okay. Then a question that I have assured you is going to be there in every board exam, every school exam. And we have talked about this. I'll just include the statement part. Prove that root 2 is irrational. Okay. We talked about this day before yesterday. And we had reviewed this thing. The complete solution we had reviewed. It was asked in 2023. It's asked almost every year, only the number changes. So that particular number has been asked in 2023, but it repeats every year. Okay. We understand its importance, even for the routine tests, hopefully. Next. Okay. Now this one is the planning thing. Next one. A pair of rational numbers that could be answered on the basis of class 9. A pair of irrational numbers. A pair of irrational numbers. Do rectify that. Whose product is a rational number. A pair of irrational numbers whose product is a rational number. We have 4 options. You need to shortlist. Root 16 into root 4. Root 5 into root 2. Root 3 into root 27. Or root 36 into root 2. This was asked in CBSE board exam 2024. Okay, come on. This could be easily performed on the basis of the information available from the class 9. Okay, let's see. Which 2 irrational numbers being multiplied give you a rational number? Out of these, that's it. Out of these. B. Achha, I just wrote B2 with 2 sides. Okay, hold that. So, this particular one is C. Now. Okay, let's do it now. Which one now? C. Okay, why not the first one? Yes, they intentionally played the game by placing that number within the root so that it might appear to be an irrational number. But we know that root 16 is already 4 and root 4 is already 2. So they are not irrational. Otherwise, that would have generated the value. Achha, what is happening here? Root 3 multiplied by root 27 will give us root 81, which is 9. So it gives us a rational number. Option number C will be corrected. Okay, so we will get a 1 marker for this. Next one. Okay. Next range of question. Let's see. Coming up. If A and B are 2 co-prime numbers, then A cube
and B cube are, let's see, co-prime, not co-prime, even, odd. This was asked in 2021. Okay, let's see what it could be. What co-prime meant? No common factors other than 1. So if there are two numbers which do not have any common factor, take any two co-primes, I guess, and do their cubes and check out what they are. कोई भी दो co-prime numbers आप ले लो जिनका कोई common factor नहीं हो, उनके क्यूब करके देख लेते हैं उन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन आएगा क्या। दो co-prime नंबर ले लो कोई से भी, कौन से ले लें, 2 और 3, लेट्स से 2 and 3। तो अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, दे आर co-prime, they do not have any common factor other than 1. Now a cube will be what? 8. B cube will be what? 27. Can they be simplified? Do they have any common factor? No. So they will also be co-prime. Okay. They will also be co-prime. Fine. We just applied the concept. Okay. Another interesting one coming up. Let's see the next variety. बहुत जनरलाइज क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक नंबर सिस्टम के रेगुलर अप्रोच से भी कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस चैप्टर को वर्कआउट भी नहीं किया हो किसी ने तो भी। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट composite number. They've also mentioned, specified the type. 2-digit composite number and smallest composite number and smallest composite number. Okay. 12, 4, 20, 44. The question is from sample question paper 2019. Let's do this. Smallest 2-digit composite number and smallest composite number जो भी होते हैं, हमें उनका LCM चाहिए। हमें उनका LCM चाहिए। It's a clear practical approach question. सबसे छोटा 2-digit का composite number. What are composite number? Which have more than 2 factors other than 1, the numbers that comes in the table of other numbers, है ना? Okay. सबसे छोटा 2-digit composite number कौन है? 10. Okay, done. That's 10. Perfect. सबसे छोटा composite number कौन है? 4. बस 10 और 4 का LCM बता दो। 10 और 4 का LCM बताओ। 20. That's it. Done. One more mark scored. 20. Yes. अच्छा, बाकी तीनों का तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया था 10 के साथ, है ना? द रेस्ट ऑफ द 3 कुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 10, तो इवन थॉट भी नहीं आना था उसको तो एलसीएम के चक्कर में, तो ऑप्शन वाज क्लियरली सेपरेटेड। नेक्स्ट वन, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। although we did this earlier in classes, let's take it once again. If a is equals to x3 y2 and b is equals to xy3, they have asked us LCM of a comma b. The question was asked in the year sample question 23. This question is asked every year, only the terms changes. Every year in the exam, this particular question always arises. Yes. LCM means the highest powers. LCM means we need to take the highest powers of both the terms. So cube from the A and cube from the B.
That's the LCM. That. Okay. Next. Again, an application-based question on HCF LCM. The LCM of two numbers is 2400. Which of the following cannot be which of the following cannot be their HCF? Cannot be their HCF. Okay. An interesting concept to be used in this question. Now we talked about this in the last class. Okay, 300, 400, 500, 600. Can you answer me immediately? The question was asked in 2021. Yes, everybody is okay with that? और हमने concept पढ़ा था. The concept was, we noted that too. We highlighted that concept that HCF is always a factor of what? LCM. So yes, 600 is a factor, 400 is a factor, 300 is a factor. The remaining one is 5. So that clears. Okay. Okay. This statement was once asked in assertion reasoning. HCF is a factor of LCM. This was asked in assertion reasoning. Okay, let's take the next one. Now, this is a HOTS category question. Usually schools pick up if they would like to generate a little bit of level in the exam. Let's take it. The greatest number which when divides 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively is 575, 450, 750 or 625, asked in the year 2021 again. This is an interesting variety. 1251 से जब डिवाइड हुआ तो 1 रिमाइंडर बचा. तो जब वो रिमाइंडर हटा दिया मतलब ऐसा नंबर आ गया जो पूरी तरह डिविजिबल है, होगा. देन 9377 इसमें से 2 का रिमाइंडर बच रहा है तो हमने हटाया, और जब रिमाइंडर हटाया तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरह डिविजिबल रेंज का होना चाहिए था. 15628 में से हमने 3 हटाया, हमें मिला 15625. And now I need to find the HCF of these 3 numbers. And that HCF would be our answer out of these 4 options. Check करते हैं. For finding the HCF, we have to prime factorize them. MCQ question है, but a little bit of time it will consume to factorize all of them and to conclude to the HCF. Now the greatest number that is divisible by, I gave you the hint in the previous class too. We have to find the HCF because our number is dividing all of them. So it's a factor. We have to find the HCF of 1250, 9375 and 15625.
1250 when prime factorized gives us 2 into 5 की power 4 when it will be completely prime factorized. 9375 would have generated you 3 into 5 to the power 5. And this is 5 to the power 6. So what is the common part? 5 to the power 4 is common among all of them. 5 to the power 4 is the HCF. HCF में we took the small powers na, of the common numbers. And that is how much? 625. Okay. So get this variety in your range, huh? If it comes up. Okay, next range. कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस क्रिएट होते हैं वट एवर इंस्ट्रक्शन दे गिव यू जब यू नीड टू फॉलो इट नेक्स्ट वन द रेशो ऑफ एलसीएम एंड HCF of the least composite number, that means the smallest one, the least composite number and the least prime number and the least prime number. 2023 and 2021. Although we do have the options, but we can find them on ourselves. Once 1 is to 2, 2 is to 1, 1 is to 1, and 1 is to 3. Come on, let's execute this. First, we have to find the HCF and LCM of least composite number and least prime number. लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम का पहले HCF LCM जनरेट करेंगे और फिर उनका रेशियो ले लेंगे चारों में से एक ऑप्शन अपने को कनेक्ट हो जाएगा लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट देम 2:1 ओके least composite number was 4 again and the least prime number 2 बस यार that's it अब 4 और 2 का HCF कितना आएगा 2 आएगा 4 और 2 का LCM कितना आएगा 4 आएगा और हमें LCM और HCF का रेशियो लेना था यानी ऊपर LCM और नीचे HCF जो पहले लिखा हो वो न्यूमरेटर में रहेगा तो LCM कितना है 4 HCF कितना है 2 रेशियो कितना क्रिएट हो गया 2:1 दैट्स इट ठीक है होता है पॉसिबल एरर ध्यान रह जाता है HCF LCM का रेशियो निकालना तो HCF पहले ले लिया LCM बाद में ले लिया 1:2 का आंसर आ जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा सो इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि जो पहले लिखा होगा वो न्यूमरेटर का काम करेगा ओके चलिए नेक्स्ट रेंज लेते हैं फिर नेक्स्ट वन ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं कुछ एनसीईआरटी से आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पलर से आ जाते हैं कुछ रैंडम लैंग्वेज जो बोर्ड एग्जाम खुद से क्रिएट करता है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स LCM of two prime numbers P and Q where P is greater than Q is 221. The value of 3P minus Q. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन रेंज होगा जहां पे आप अपने आप को बाकी की भीड़ से सेपरेट कर दोगे अगर आपको ये आउटकम का आंसर मिल गया
क्योंकि ये अबव एवरेज बिल्कुल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अप्रोच का क्वेश्चन होता है, जो कुछ लोग अप्रोच कर लेते हैं और हमें लीड मिल जाती है। ऑप्शन आ जाते हैं तो चीजें और भी आसान हो जाती है। ट्राई करके देखिएगा, सोच के देखना पड़ेगा पहले। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2021 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में था। SQP 2021। कम ऑन, लेट्स गेट आवर थॉट्स ओवर इट। दो प्राइम नंबर जिनका LCM 221 हो, ऐसे दो प्राइम नंबर आपको ढूंढने होंगे। दो प्राइम नंबर जिनका LCM 221। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू, इसलिए अप्रोच वेराइटी कवर करना है अपने को, ताकि रेंज बड़ी बने। तो LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज always the product of the primes. Okay. So when we tried to find out the factors of 221, we got 13 and 17. ठीक? As they clearly said, P is greater than Q. That means the value of P is 17 and the value of Q is 13. And we'll substitute it here and find the answer. 3P minus Q will be 3 into 17 minus 13. That gives us 51 minus 13. That gives us 38. Okay. So that's a new add-on in our vocabulary. एक और रेंज का क्वेश्चन हमारे पास जुड़ गया है। अगर कभी पूछा जाएगा तो विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। बट सबका रिव्यू जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अगला रेंज देखते हैं। Now this I guess is a basic range. We have worked it out earlier. Exponent of exponent of 5 in prime factorization of 3750. Okay, 2021. Exponent of 5 in the prime factorization. Quickly prime factorize it and it's done. 5 to the power 4. Okay. Let's just prime factorize 3750. That's it. एक्सपोनेंट मतलब पावर है ना, सो वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि 5 की कितनी पावर आ रही होगी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सब कर लेंगे। स्मार्टनेस ये थी कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किस नंबर से किया। स्टार्टेड विद व्हाट नंबर? 3। 3। प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू किस नंबर से किया? 2। आर। ओके, मुझे पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन की नीड ही नहीं थी, सिर्फ ये चेक करना था कि 5 कितनी बार आने वाला है। तो वाई डोंट आई स्टार्ट विथ सिंपली 5? तो स्टार्टिंग के स्टेप्स में बस मुझे 5 ही तो पता लगाना है कि हाउ मेनी 5s कुड बी जनरेटेड। स्टार्टिंग विथ 2 and 3 इज नॉट रॉन्ग, बट विल कंज्यूम योर टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। एक्स्ट्रा डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं एरर हो गया तो फिर और कंसर्न। सो वी शुड हैव स्टार्टेड विथ 5। वी शुड हैव स्टार्टेड विथ 5 and 5 will come 4 times. We'll cover up the division. 7, 750, 250, right? Sorry.
750 के बाद 150 एंड देन 30 एंड लास्ट 6। अब हमें पता है कि 5 नहीं आ सकता इसके आगे, दैट्स फॉर श्योर। सो वी गॉट 5 टू द पावर 4, just consuming a little bit of time, consume, no, saving the time and avoiding the calculation errors। ठीक है, तो एक बेसिक से क्वेश्चन में भी स्ट्रैटेजिक वर्कआउट है जो बोर्ड्स में काम करवाएगा, समय बचाना है अपने को। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट रेंज। Okay, they're asking us the sum of exponents, sum of exponents of prime factors of prime factors of 196. Okay, that's it. 2020. Okay, let's do this. 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी एक्सपोनेंट्स आने वाले हैं उनका सम, बस। This was asked in MCQs। 196 प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने एक्सपोनेंट्स आने वाले हैं उनका सम। So we have to completely factorize 196. Started with 2. Okay. 7771. So 196 is 2 to the power 2 and 7 to the power 2. Exponents ka sum. These are the exponents. And when they are added, they gave us 4. So generalized question, है ना? हर रेंज का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवेलेबल होगा आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट रेंज देन। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में भी करे हुए हैं, तो वो भी पार्ट है, आई एम नॉट टेकिंग देम टुडे अगेन। वो भी ऑलरेडी पीवाईक्यूज का हिस्सा थे, दैट वी हैव कवर्ड अप। ओके, now let's take an assertion reasoning which has been asked from this chapter in 2022 sample paper। assertion: HCF of any two consecutive even natural number, even natural numbers is always 2, and the reason given is even natural numbers are divisible by 2, are divisible by 2। Okay. Okay, fine. Think over it. Think over both the statements. Consider every possibility. What the answer could be. You already know the options, है ना? A is true, R is false, R is true, A is false. Both are true, but not the correct explanation. Both are true, but the correct explanation. So to will select out of them. हाँ, 79 मार्क्स तो आ चुके, बस ये वाला सही हो गया तो 80 आ गया। ओके, हाँ, 2022 का सैंपल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है ये, SQP 2022।
वो नहीं पता चल रहा है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई थॉट आ रहा हो? बताओ, पहला स्टेटमेंट फॉल्स क्यों कह रहे हैं अपन? टू की पावर कुछ भी हो सकती है। टू consecutive even natural numbers, what are, how are these numbers? What are consecutive numbers? Okay, let's take random cases, no issues. दो consecutive even number बोल दो अपनी चॉइस से। ओके, यस दे आर consecutive even natural numbers। अब बताओ इनका एचसीएफ क्या है? गॉट इट। द एचसीएफ इज टू। कोई और नंबर लो, लेट्स गो फॉर सिंगल डिजिट, 4 and 6। द एचसीएफ इज अगेन टू। इवन नंबर्स है ना, दे आर डिविजिबल बाय टू। वो प्राइम नंबर है, शॉर्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर है, बड़ी पावर का चांस ही नहीं होता। ठीक है। व्हाट यू मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या होती, वो कहते हैं 4 and 8। अब मैं कहता कि हाँ, द एचसीएफ इज नाउ 4, बट दीज नंबर्स आर नॉट consecutive। ठीक है, दैट्स द अप्रोच, दैट्स द गेम। यस, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट देयर द explanation is not meant, है ना, it's not describing the HCF case. Yes, all the natural numbers are divisible by two even numbers, है ना, but it is not at all describing the above situation at all। ठीक है, तो the option number B uh, was the correct answer for this। ठीक है, तो ये भी हमें एक अच्छा रेंज वर्कआउट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और हम्म किसका? वो रीजन कुछ इस तरह का लिखा हुआ आता कि अगर एक नंबर n है और दूसरा नंबर n, मतलब एक नंबर 2n है, 2 का मल्टीपल है, और अगला नंबर उसी का +2 होता है कॉन्जिक्यूटिव, तो अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाऊंगा, है ना, तो जैसे यहाँ 2 कॉमन ले लिया मैंने, व्हाट इनसाइड वुड बी सम n+1। अब 2n और 2n+1 में अगर कोई मेरे से एचसीएफ पूछता तो मैं साफ साफ में क्या लिखता? 2। ठीक। ऑल्दो इवन नेचुरल नंबर्स और भी बहुत सारी चीजों से रैंडमली डिवाइड हो सकते हैं, तो सिर्फ 2 की डिविजिबिलिटी इज नॉट मैंडेटरी कि वो एचसीएफ 2 आ रहा है ना। ओके, और लेते हैं। बस ये ऐसा ही अप्रोच अपने को हर चैप्टर के समय पर यही करना है। चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी करी, एग्जाम्पलर रैंडम क्वेश्चंस किए और पीवाईक्यू से फाइनल टचअप दे दिया, वे रेडी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक फॉर्मूले को कवर किया गया था, उस पे एक जो है ये क्वेश्चन जनरेट होके आ रहा है, ये देख लेते हैं हम। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, HCF of two numbers is 27, okay, and their LCM is 162. If one of the number, if one of the numbers is 54, find the other number. Find the other number. Okay, let's do this. It's based on the formula that we have covered up in this chapter, the only formula that we talked about between HCF and LCM. ठीक है, so the situation formula utilized will be HCF into LCM is equal to product of two numbers। ठीक है, so we have three parts out of this, one is unknown,
HCF is 27. LCM is 162. Product is, sorry, one of the number is 54. We have to find the other one. That's it. 27 twos are 54 and 281s are 162. So we got that other number to be 81. That's fine. ठीक है. अब एक रैंडम वेराइटी प्लेस कर रहा हूँ. कुछ स्कूल्स इस वेराइटी को बहुत पिक करते हैं अपनी स्कूल एग्जाम में डालने के लिए. बोर्ड्स में एक बार आया है, सैंपल पेपर में आया है, पेपर में नहीं आया. पर स्कूल एग्जाम्स में ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी रिपीट होता है. लेट्स टेक इट. द HCF of 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238, find m. It was in SQP 2024. Have a thought over it and then we'll talk about the range of this question. $85 और 238 इनका HCF निकाला जाएगा. 85 में शुरू किया हमने 5 1 7 खत्म. यहां शुरू किया अपन ने 2 119, that is going by 17. How many times? 17 times, right? So we got 17 here also. So we got HCF as 17. And the question itself says कि ये HCF इस फॉर्म में लिखा है हमने. तो we'll equate it. 85m minus 238 is equal to 17. Let's find m. It's done. 85m is equal to how much? The value of m. This is how much coming up? 255. So m comes out to be 3. Another interesting range, a new range that we have included to find the HCF and equate with the given expression. Okay. Next, let's quickly take up some few more. Almost done. We're just covering up the range here. Almost done. Let's see the next one. 3 bells ring at an interval of 4, 7, and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. When the 3 bells will ring together next. Okay. SQP 2020. Okay. हमने डिस्कस किया था कि बस ये चेक कर लिया जाए कि आंसर जो आना चाहिए प्रैक्टिकली वो इन तीनों से छोटा आना चाहिए या बड़ा आना चाहिए. अब अगर, हाँ, अभी इस वाले केस क्योंकि
एक बेल 14 मिनट्स के बाद बजती है, तो जस्ट 4 मिनट के बाद या 4 मिनट से कम टाइम में उस बेल का बजना पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो एचसीएफ को तो अप्रोच कर भी नहीं सकते थे, और एचसीएफ उन तीनों में है भी नहीं, वन ही है। फिर जब हम, भाई ऑब्वियसली हमारा अप्रोच दूसरा बचा, टू वेंट फॉर द एलसीएम। और क्योंकि नंबर्स बड़े छोटे थे, देवर इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, आपका जो एलसीएम इन तीनों नंबर्स का आ रहा है, दैट इज 28। 28, 4 sevens are 28, 7 fours are 28, 14 twos are 28. Done. So if the bell rang at 6 a.m., then next it will ring after 28 minutes at the time of 6:28 a.m. Okay. The remaining range of questions that are available with me are to prove a particular number to be irrational, 5 plus 2, 3, 2 root 3 as irrational, 2 minus root 3 as irrational, that complete theoretical section. 15 to the power n was asked in 2024 paper. 15 to the power n cannot end with the digit 0. So what would you describe? 5 तो है वहां पे. Why 15 to the power n could not end with the digit 0? Sorry? 2 and 5 both should be available. What we have here is 3 and 5. So we are missing 2 right now. That could be dealt off.